Yeah. Hey Swati, thank you for taking out the valuable time to come here on the show. Could you introduce yourself, please? Okay. Yeah. Hi. This is Swati Soni, and I'm taking a dance classes. I have my own social media handle. The complete page is all about how the various forms of dance I teach and perform. And that's all about the initial level. Later on, you will come to know. Right. So, can you share your journey that led you to become a dancer? Yeah, sure. Why not? It's really an interesting journey that my mom came to know about my interest at the early age of 4 to 5 years, and she put me into a Kathak dance form Right. classes, and that institute itself having their own format of performing, like they put us on the stage for live performance in front of the audience. So that's how my journey started from the very early age. My mom saw that I was just growing on the songs, 90s songs while watching TV. So she thought, why shouldn't it put her into dance? And that's my journey started from the beautiful dance form. I must say, Kathak is the basic where I started. But now, Right. because of Kathak, I'm doing many other dance form also. Right. So, So this is how. dancing as a career in India is seen a Ah, little unconventional, right? So, how did you right. overcome this stigma? See, my journey, as I already told you, that I started my journey from the dance classes, and Right. then there are, but later on, as I proceed, as I grew up, because with my academies, I was learning the dance. So the thing is, as I grew up, the focus is more towards my studies in spite of dance. So, but perhaps I really wanted to pursue my career as a dance, but those times dance was not at all considered as a career. Right Right. now, there are many options. The fields are there, the opportunities are there for the dancers. But that time, there was nothing that people consider dance as a career, as a professional career. So unfortunately, I have to start study, like giving more time towards my study, did my graduate, did my postgraduate, and simultaneously because I really love it. This is my passion. There's like without dance, I can't feel that I am alive. So I was completely doing the practice simultaneously whenever I get the time from my studies, not in the exactly the way I wanted to, but I was practicing. I was being in touch with all the teachers who make me learn to the level. I gave my Kathak exams also, the degree. There are I exams have as well. Kathak. Yes, yes, there are levels in Kathak. So I did that also. Before my Right. graduation, I gave the level of exams in Kathak. I did I performed for in many states because the institute where I was learning, they was keep calling me because I was not as a regular student, but they keep calling me. The teachers, I have touch with the teachers, so they keep calling me for the performance. Swati, this is the opportunity you will have. So just go for it. कैसे भी manage कर लो. Studies है, exams है. So simultaneously, both the things were going on well. And I Right. was like quite satisfied that I am in touch with my studies and simultaneously with my dance. So nothing is like कोई कुछ छूट नहीं रहा है. But later on, as I grew, as I studied more, my career, my career line completely switched to the into my. I am a management student, so I shifted to the management side instead of choosing as a dance as my career, and I started my job in bank. I did. I was practicing. I was taking classes. I was taking choreographies, Sangeet choreographies, but not as a professional career, like completely into this. Right. I was not doing that. Simultaneously, I was doing it whenever I get the time. Hmm. Later on, the time gradually goes, and my career also going towards.
ahead, and my dance is also a little bit going. But I was not at all satisfied because I really wanted to choose dance as my Of main career, course. and the other thing is like a secondary part. So as I proceed further, later on, I realized that I am not the person who can sit for like Hmm. 24 hours and do the job and do such kind of stuff. I am a creative person. I can't do my like things in that way, which I don't want to pursue. So what I did, I left my job. Right. After my marriage, I left my job. I left everything. I started working from home, a small kind of work, and considering whole practicing again towards focusing Hmm. towards my dance. Right. And I started learning again after a few years because there was a huge gap of between like 7 to 8 years. I couldn't cope up with the time because the Hmm. you might be knowing that dance has also changed as the era comes and Yes, goes. Dance yes. keeps on changing. So Right. I have to be updated to perform also and to teach also. Hmm. I was just doing at a basic level. I don't want this level to be work with me. So Hmm. what I did, I learned again. I learned Kathak again, like the basic thing because I was already trained. So just a brush up needed. I did that from Mumbai itself and completed with the complete, you can say the guidance. I started again my classes Right. and thankfully the offline classes goes very well. They are going very well, but all goes in a flow. The big stop is pandemic. So I thought abhi kuch nahi ho sakta. Again, it seems like there is a big pause. I can't do anything. Everything is stuck. Everybody is home. I can't take my classes. So Hmm. I saw many people around who are taking online classes. And teaching online semi-classical dance form is a bit difficult because you have to focus on expressions, on body movements, hand postures. You have to focus on many things with the music, so it is a challenging task for me to do. Still, let's try. I thought there's no other option. And I Right. already left my job, no work to do. And I can't sit like I can't do the it was a harsh feeling that you wanted to do so many things but you can't do. Your hands are like this. Sorry. So I started with online thing and like this pandemic where I was thinking this is a stuck, it goes very well. It flourishes my social Wow. media page, my dance class. It's like from worldwide people are inquiring. Like people are joining from so many cities, so many places. I was not knowing that this will go in this way, the long way. Hmm. Earlier, when I was taking offline classes, there are few areas in Mumbai which I'm covering, but later on, there's no limit. Online has no limit. We came to know so many students there. I was running 4 batches in one day. And it's my rule. I can't take 7 to 8 students, more than 7 to 8 students. But online, I can take 15 students together. Right. So it was a huge platform for me. Till now, I am taking online classes. I like right now, I'm not taking because the vacations are on, but the Hmm. students are there with me. They are learning, and I'm taking choreographies, dance classes, offline, online, Zumba classes as well. I'm a Zumba trainer too. So all are going well in good way. So this is how my journey started and grows on. So I switched to my career, like initially graduation, then post graduation, then my job, then marriage, then switched the thing completely, stuck all, closed all the things, and then started the career again. So this is the journey how I proceed. Beautiful. Like, if someone wants to transition from a conventional job to a more independent or artistic field, would you recommend them to first take some part-time job and build a client base, or brush up their skills? Um, See, if you are not connected with your work, whatever the work is, whether you are in a something into creative field or something into artistic world, if you are not connected, I would suggest
first do the basic needful studies for it. Whatever the practice is required, the study, basic knowledge, you should know about that. If you're not having, you have to learn it first. You have to understand the field first. Right. Okay. If you are already in touch or you somehow lost the touch as I did in my past. So what you have to do, you just need a guidance. You just need a brush up. So as you mentioned, kind of part-time will work for you. Hmm. Okay. So, but try to do like so many like fields are there where part time also doesn't work because they want a full time people like for work. They want for example digital marketing. If you work for part time, the agencies are not consider you as a part time, or they won't entertain you. Hmm. So you have to completely be into that job for some particular time. Then you can start your own. बिकॉज यू नो इन एंड आउट फिर जो भी ट्राई तो करना ही पड़ता है हर फील्ड में रिस्क एंड यू हैव टू ट्राई like without taking risk you can't like proceed further, you can't flourish your career. So if you really wanted to my suggestion is you really wanted to get something, you really wanted to be in that position or be in that field in a lead. Hmm. So my suggestion is take some proper knowledge and then proceed. Then Right. proceed with by your own. Then take the risk. If you are not having the content with you, you can't proceed. The struggle is always there to choose between something that is risk free, True, but true, yeah, true. right. एंड ओन वन मोर थिंग, मतलब Yeah. बी रियल. अभी कॉपी कॉपी बहुत चलता है. लाइक इफ Hmm. यू से कि डांस भी कॉपी होता है तो दैट इज फाइन, दैट इज नॉट अ क्राइम. बट कॉपी में भी बोलते हैं ना, नकल में भी अक्ल लगानी होती है. सो सेम दैट वे, अगर आप कॉपी भी कर रहे हो तो अपना अपना मिक्स डालो. लाइक ट्राई टू पुट इन योर वे. ऐसा नहीं कि जैसे उन्होंने किया है वैसे का वैसे कॉपी कर लिया, फिर आपको क्यों देखेगा या आपका काम को कोई क्यों पसंद करेगा. वरना तो फिर यूट्यूब पे एटलीस्ट ही वीडियोस आधा है. नहीं. ट्रू, राइट. ट्रू. आपको देखने के लिए लोग इसलिए आते हैं कि आपका कुछ है, आपका कुछ एक एक्स फैक्टर बोलते हैं ना, राइट. वैसा कुछ आपने उसमें डाला है. एंड दैट एक्स फैक्टर क्लिक्स द पीपल. Hmm. Okay. दैट्स व्हाट आई थिंक. So the students who come to you for dancing, what are they looking to gain from learning dancing? बेसिकली जो भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जितने भी अभी तक मैंने बच्चों को या बड़े लोगों को Hmm. जिनको भी सिखाया है, बेसिक उनका मोटो होता है कि हमें अच्छा सा परफॉर्मेंस आना चाहिए स्टेज पे. हम वी कैन परफॉर्म बेटर इन फ्रंट ऑफ Right. पब्लिक और ऑडियंस. हार्डली पीपल कम टू लर्न द बेसिक स्किल्स. what you Hmm. have to like say कि आपको स्किल बनना है या ट्रेन्ड बनना है इन दैट फॉर्म. हार्डली पीपल कम. पीपल हैव द वन इंटेंशन कि हम अच्छे से, बिकॉज वी लाइक डांस, we can't do better, so we came here to learn to perform in front of public, in front of audience. Right. Usually the thought is that, but what I think is जब मैं डांस सिखाती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि बच्चा आया है तो बस स्टेज परफॉर्मेंस करे और हो जाए. नो, दैट्स नॉट माय ओनली मोटो. माय मोटो इज लाइक कि उस डांस को आप फील करो. व्हाई? Hmm. इफ यू फील योर डांस, इफ यू आर डांसिंग, आप अगर उसको फील करते हो तो समहाउ आप इनर सोल से कनेक्ट होते हो. एंड जब आप इनर सोल से कनेक्ट होते हो तो आप कहीं भी किसी भी सॉन्ग पे कैसे भी आप उस पे अपने आप को एंजॉय करा सकते हो. और Right. जब आप अपने आप को एंजॉय कराते हो तभी आप ऑडियंस को एंटरटेन कर सकते हो. Right. अगर आप खुद किसी चीज से एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप अगर आप उस म्यूजिक को खुद समझ नहीं पा रहे हो, तो आप क्या ही पब्लिक के सामने एंटरटेन कर पाओगे. तो जब ये मैं रिवर्स थेरेपी अप्लाई करती हूँ तो देन आई सॉ द मिरेकल्स. बिकॉज ऐसे ऐसे स्टिफ स्टिफ बॉडीज आती हैं मेरे पास जिनको बिल्कुल मूवमेंट नहीं आता है. तो Hmm. उन उन वो मेरे लिए एक चैलेंज होता है कि आप बिल्कुल मूव नहीं कर सकते हो, बट यू हैव समवॉट स्पार्क टू डांस. तो उसको कैसे मैं मूव करवाऊं विद द वर्ड्स एंड विद द म्यूजिक. तो उस टाइम पे आई ओनली टेल देम कि आप ना सबसे पहले म्यूजिक एंजॉय करो. यू अंडरस्टैंड कि वो म्यूजिक में बोलना क्या चाह रहा है. मैं कैसे भी कोई भी एक्शन कहीं भी डाल के आपको करवा तो सकती हूँ, बट आप लाइव जब परफॉर्म करोगे यू वोंट बी एबल टू डू इट इन
this way because यहाँ तो मैं हूँ guidance के लिए. Right. I'm correcting it each and every places. But when you will be performing, no one is there to guide you. तो आप सबसे पहले अगर परफॉर्म करना चाहते हो तो इस बेसिक चीज पे काम करते हैं. लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे मैं डांस, मेरे को ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि एक कोरियोग्राफी सिखाई और वो करा और डन हो गया. आई यूज टू डू बेसिक. पहले मैं कोई भी क्लास को स्टार्ट करती हूँ तो सारे स्टूडेंट्स को पहले बेसिक मूवमेंट सिखाती हूँ जिससे कि वो कहीं भी कोई भी डांस पे एक बार करना चाहे तो रुके ना. तो ये मेरा एक पैटर्न रहता है. और बच्चे जब मेरे पास आते हैं तो आई हैव टू टेक लाइक विद द किड्स देयर इज अ बिग चैलेंज बिकॉज बच्चे रिपीटेटिवली ऑन लूप एंड लूप प्रैक्टिस करते हैं तो बोर हो जाते हैं. तो हार्डली आई हैव टू टेक ब्रेक्स. आई हैव टू प्ले सम इनोवेटिव गेम्स विद देम. कुछ न कुछ क्रिएटिव कराना पड़ता है. कभी कोई पेन पेपर एक्टिविटी करवाती हूँ, कभी कुछ पेंटिंग से रिलेटेड करवाती हूँ. सो इट्स नॉट अबाउट ओनली डांस, इट्स ऑल अबाउट द ओवरऑल. थोड़ा बहुत दूसरी दूसरी चीजों से भी Right. डेवलपमेंट होता रहता है बच्चों के साथ. इट्स लाइक दैट. This is such a good point you raised. Like, किसी को भी आप piano का एक song सिखा सकती हो, लेकिन if you teach them how to compose a song, they can make other songs as well. They get the confidence na. The basic thing is to Right. people are fear, hesitate to dance, people hesitate to come in front of audience. तो वो चीज को हटाना, अगर वो चीज को मैंने हटा दिया तो फिर वो कभी ना तो क्लास में हेजिटेट होंगे, फिर वो कितने भी बच्चे हों उनके सामने करने में हेजिटेट नहीं होंगे और फिर वो धीरे धीरे ऑडियंस से ओपन अप होंगे. तभी तो वो परफॉर्म कर पाएंगे. कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ओपन अप नहीं होते हैं, मेरे Right. बहुत ट्राई करने के बाद भी ओपन अप नहीं होते. वो सीख कर जाते हैं स्टेज पे, दे डू नथिंग, दे जस्ट स्टैंड, दे जस्ट लिसन टू म्यूजिक एंड दे कम बैक. दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म इन दैट वे. सो ऑल गोज वेस्ट. एंड द मदर कम्स एंड उन्होंने तो कुछ नहीं किया, टीचर, दे जस्ट स्टैंड देयर एंड कुछ नहीं हुआ स्टेज पे, दे डिडंट परफॉर्म. देन आई आस्क्ड स्टूडेंट व्हाई डिड यू डू दैट, यू नो कंप्लीट स्टेप. अच्छा वही बच्चा मेरे सामने आके मैं गाना चला रही हूँ, प्ले कर रही हूँ, परफॉर्म कर रहा है, बट स्टेज पे ही वाज कंप्लीटली ब्लैंक. रीजन इज कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. नहीं बूस्ट अप हो पाते हैं तो नहीं कर पाते. इट्स दैट वे. So, do most of the people that come to you want to learn Bollywood songs? True. Many majority would love to like do the trending songs जो भी अभी चल रहा है. और I have to take in that way also because the Right. demand is that way. But I take semi-classical dance form also. I take many Bollywood songs, but in semi-classical beats. So there are two classes. That semi-classical dance form is different batch, and the Bollywood dance form is different batch. Because semi-classical is somewhere I not teach proper Kathak, but postures. I teach the leg movements, especially the foot movements and the expressions. So whole basic thing about Indian traditional dance I teach in the semi-classical dances and dance class. And the Bollywood is like always going on trending songs. पे आप सिखाओ कुछ भी, western form सिखाओ. उसमें I sometimes I make a combination of Western and Indian dance form in Bollywood songs also. So in that way, I used to take. So, how do you come up with the movements? Okay, this is a very interesting question. Actually, the thing is, अभी क्या होता है ना, कोई भी एक you pick a single song. तो अभी मैं जब सिखाती हूँ तो मैं पहले बच्चों से पूछती हूँ कि ये सॉन्ग का मीनिंग क्या है. Just let me know कि आपने इस सॉन्ग में क्या समझा. तो अगर उस मीनिंग में बच्चे अगर कुछ गैदर कर पाते हैं, जैसे सपोज कोई भी एक लाइन लिया और बच्चे अगर उस मीनिंग को कैच कर पाते हैं, तो मैं उस मीनिंग को, जो बच्चे समझते हैं उस मीनिंग को लेती हूँ अपने पास में और उस मीनिंग से कंपोज करती हूँ. जैसे सपोज किसी बहुत कॉमन थिंग है, आंखें दिखानी है, तो आंखें दिखानी है तो आंखें तो बहुत तरीके से दिखाई जा सकती है, ऐसे ऐसे बहुत तरीके होते हैं आंखें दिखाने के. तो जो जैसे वर्डिंग्स में दिल आया है, प्यार आया है, बहुत सारे ऐसे वर्डिंग्स कॉमन होते हैं जहाँ पे कुछ कुछ बच्चे समझ पाते हैं, कुछ कुछ मुझे बिना मीनिंग समझाए भी उनको एक्शन देना पड़ता है. सो इन दैट वे आई यूज टू परफॉर्म. एक छोटा सा इंसिडेंट यहाँ पे कॉमेडी था. बहुत हंसे हम लोग उस क्लास में. एक शेयर करना चाहूंगी. एक 7th स्टैंडर्ड का लड़का था.
एंड देयर वाज अ मिक्स बैच, मतलब उसमें थे 6, 7, 8, 10 10 ईयर्स तक के बच्चे एक ही बैच में थे, और गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर। so that guy, बच्चा छोटा सा आया और बोला, टीचर आई जस्ट वांटेड टू लर्न, मुझे यही गाना सीखना है पर्टिकुलरली। अब वो वाला था ना, अपना टाइम आएगा, Hmm. रणवीर सिंह का। was that time it was very trending song। मैंने कहा पक्का for sure after this class, because I'm already Hmm. taking, मैं पुराना song जो है उसको finish up करती हूँ, and then next song this will be, I promise this will be the next song। but he was like, नहीं मुझे ये song अभी करना है। बच्चे हैं, 7 years का था, तो फाइन, आई टोल्ड ठीक है करते हैं, पहले ये करो। तो व्हाट ही डिड, उसने ना जो रणवीर का स्टेप था, अपना टाइम आएगा का जो हुक स्टेप था, he did in the current song which I was teaching whole students, and he was into second line, first row में नहीं था, second row में था। तो Hmm. जो उसने किया same step, other kids also followed him, and the whole class did the hook step of Apna Time Aega in spite of the other song. And that moment was, I was like, I can't stop laughing. I mean, what is going on? मतलब मुझे गुस्सा आना चाहिए था, पर मुझे गुस्सा नहीं आके मुझे, आई वाज लाइक लाफिंग ऑन द थिंग दैट वो बच्चे को कितना अच्छे से वो सेट हो गया दिमाग में वो Hmm. स्टेप कि वो किसी भी दूसरे सॉन्ग के रिदम पे उसने सेट किया। सो दिस इज द इंसिडेंट व्हिच आई ऑलवेज लाइक, मैं इतनी हंसी आई उस इंसिडेंट के बाद कि मुझे समझ में आया कि अगर बच्चों के दिमाग में कुछ फिट कर दिया जाए, तो वो कहीं पे भी उसको उस रिदम पे उस एक्शन को सेट करने भी आ गया, जो कि मैं काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे आप ऐसे करो, यू डू इन दैट वे, ये ज्यादा बेटर जाएगा इस रिदम पे। वो उसको नहीं करके उसने उस फास्ट स्टेप को स्लो करके उस स्लो सॉन्ग पे सेट कर दिया। सो दिस इज हाउ दे वर्क्स, लाइक समहाउ जब हम सोचते हैं मैं ऐसे कराती हूँ ऐसे कराती हूँ, नथिंग वर्क्स, और अलग ही कुछ होता है, और मुझे बच्चों से सीखने मिलता है। स्टूडेंट, माय स्टूडेंट्स टीच मी अ लॉट। Right. So, like you say that many people who come to you have stiff posture. How do you fix that? दैट इज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको वैसे ही, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं बेसिक म्यूजिक, अगर कोई भी सॉन्ग उनके पास पर्टिकुलरली उनको सीखना है मुझसे, तो मैं पहले उस सॉन्ग का मीनिंग उनसे जानती हूँ, उससे एक स्टोरी कनेक्ट करती हूँ, उसका जो फील होता है वो उनको दिमाग में पहले बैठाती हूँ। क्योंकि अगर कोई भी स्टिफ बॉडी है, तो मेरा मेन फोकस होता है कि उसके एक्सप्रेशंस पे ज्यादा पब्लिक का ध्यान जाए, या वो खुद भी अपने एक्सप्रेशन से, अपने फेस फेस की स्माइल से इससे ज्यादा दिखाए और हाथ का मूवमेंट करे। क्योंकि Hmm. बॉडी जब किसी की स्टिफ होती है, तो हैंड और लेग्स एक साथ वर्क करना उस खुद के बहुत टफ हो जाता है, और वो उसको खुद को भी टफ लगता है, फिर वो ऐसे लगता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा। तो वो चीज ना आए उसके दिमाग में, उसके लिए आई सिंपली वर्क ऑन देयर एक्सप्रेशंस। उनके दिमाग में ये बैठा देती हूँ कि ये सॉन्ग का ये फील है, और हमें इसी तरीके से परफॉर्म करना है। और फिर आगे उसके साथ में उसकी बॉडी मूवमेंट्स, जहाँ पे अगर लेग मूवमेंट है और हैंड मूवमेंट कम है, तो उसका पूरा पूरा फोकस उस सिंपल लेग मूवमेंट को रिपीट करती हूँ उसके एक्शंस में, और हाथ अलग अलग एक्शंस फॉर्म में दे देती हूँ। और साथ में जब उनको पूरा याद हो जाता है पूरा कोरियोग्राफी, आई देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन कि अब तुम तुम्हारे आप अपने आप को मिरर में देख के परफॉर्म करो। इज इट द फेस दिस सॉन्ग मीन्स? तो वो बोलते हैं नहीं, ये तो मेरा फेस का एक्सप्रेशन नहीं बता रहा है। द सॉन्ग सेज द एंगर, सॉन्ग से समटाइम्स शोइंग द हैप्पीनेस, एंड माय फेस इज लाइक ब्लैंक, it is not showing because my body is moving, my hands are moving in that way which you told, and my legs are also working, but my face is not working. So that time I started working on their facial expressions. तो एक एक करके जब मैं पूरा स्टार्ट टिल एंड रेडी होता है, क्योंकि जब भी कोई डांस सीखने आता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि मेरी पूरी बॉडी मूव करेगी। Hmm. बट मैं जब जिस इस थॉट को पहले उनको निकालना पड़ता है कि आपकी पूरी बॉडी एक साथ मूव नहीं करवानी है, सिर्फ फेस करो, फिर हैंड करो, फिर लेग करो, ऐसे सब वो सब अकस्टम हो जाता है पर्टिकुलर स्टेप पे, तब एक साथ तीनों को करवाया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दो ही चीज करवाई जाती है, फेस एंड लेग्स, कभी कभी हैंड्स एंड फेस नॉट लेग। तो पूरी बॉडी किसी किसी की नहीं हिलती, और दैट इज द चैलेंज। और वो नहीं हिलती है, इसलिए वो अपने आप को सोचते हैं कि मैं डांस नहीं कर सकता, मेरी कमर नहीं हिल रही।
हम्म, लाइक इट्स नॉट इन दैट वे। सबका कुछ न कुछ एक चीज ऐसा होता है कि वो अच्छा करता है, तो वो चीज पे मैं ज्यादा फोकस दे देती हूँ, तो वो खुद अच्छे से निकल के आ जाता है आउटकम उसका इन दैट वे। ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ लोग किसी पर्टिकुलर फंक्शन या शादी की वजह से आते हैं सिर्फ कुछ स्टेप सीखने के लिए। यस यस, मेरे पास काफी सारा चीजें आती है। मेरे पास सीजनल डांस आता है। डू यू नो सीजनल डांस क्या होता है? नो, नेवर हर्ड। सीजनल डांसेस लाइक नवरात्रि आता है तो गरबा के लिए आ जाते हैं। ठीक है। जैसे सपोज दुर्गा की पूजा होती है, तो दुर्गा पूजा की स्पेशली अच्छा। जन्माष्टमी पे डांस के लिए आते हैं। स्कूल परफॉर्मेंस करनी होती है, जन्माष्टमी के लिए आते हैं। तो दिस इज ऑल आई पर्सनली नेम इट एज अ सीजनल डांस। मतलब मेरे पास सिर्फ सीजन के अकॉर्डिंगली भी बच्चे आते हैं। सो इन दैट वे। एंड डेफिनेटली शादी का जो आपने पॉइंट उठाया है, संगीत कोरियोग्राफी सिंगल हम्म, डांस के लिए, डबल, कभी बच्चों का सिर्फ डांस होता है, कभी कभी सिर्फ एक ही संगीत का डांस कोरियोग्राफ करना होता है। ओनली ब्राइड आती है, पूरा संगीत का पैकेज भी दिया गया है मुझे। तो ऐसे ऐसे सिंगल सिंगल के लिए भी आते हैं और पूरा संगीत कोरियोग्राफी के लिए भी आते हैं। तो संगीत कोरियोग्राफी जब कंप्लीट संगीत की कोरियोग्राफी होती है, तो आई यूज्ड टू आस्क देम कि आपको कितने डांस करवाने हैं। मेनी पीपल सेड 5 कराने, किसी को बोलते हैं 6 कराने, कोई बोलता है 10 कराने। तो इन दैट वे फिर मुझे मेरे साथ एक अपना असिस्टेंट लेना पड़ता है, एंड देन आई मूव इन दैट। राइट। Since it is such a physically demanding job, you have to be on your feet all the time. How do you stay fit and healthy? See, definitely dance is a physical movement, body movement, Hmm. and I used to take classes. तो वो मेरा physical movement है ही. Other than that, like because when you are teaching, you can't regularly moving your body. You have to stop. You have to like physical movement continually नहीं होता है when you are teaching. So other than dance, I used to work out daily. Hmm. As I mentioned that I am a Zumba trainer, so I have running my Zumba classes. Zumba classes में already मैं करती हूँ, और evening walk is my mandate thing. So I used to walk a lot. तो ये मैं दो चीज है जो रेगुलरली, अदर देन दैट फूड इनटेक, क्योंकि अभी बाहर जंक भी खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आई एम नॉट ईटिंग लेस, लाइक हेल्दी फूड, थोड़ा जंक भी होता है प्रैक्टिकली। ज्यादा अपन अगर ऐसा फोकस कि मैं बहुत टाइम तक जंक नहीं खाऊं, इट्स नॉट पॉसिबल। Hmm. या तो घर में बन जाएगा, या आई मूव आउट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हैंग आउट, एंड देन आई यूज टू टेक। Hmm. सो आई समहाउ बैलेंस की, जब जब मैं घर पे हूँ, आई यूज टू टेक वाटर इनटेक, कंप्लीट पानी का इनटेक। एवरी वन हु इज doing any kind of job, especially physical job, have to more focus on water, because water is the only thing which keeps you healthy, which keeps you hydrating. Hmm. अगर आप पानी का इंटेक कम कर रहे हो, आप डेफिनेटली फील करोगे कि आपकी एनर्जी लो हो रही है उस दिन पे। यू जस्ट कीप अ काउंट ऑन वाटर इंटेक, यू विल कम टू नो एट द डे एंड कि आज मैं थकी हुई लग रही हूँ, अगर आपका वाटर इंटेक कम है तो। Hmm. That personally I feel. कभी किसी दिन होता है कि आई एम आउट, आई वोंट बी एबल टू टेक लाइक मच प्लेंटी ऑफ वाटर विच आई रियली वांटेड टू। अगर ऐसी जगह पे हूँ, काम पे हूँ, कभी कभी होता है, भूल जाती हूँ, नहीं ध्यान रहता है। बट फिर जब दिन खत्म होता है, आई फील लाइक कि आज मैंने पानी का इंटेक कम किया है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। इफ यू विल स्टे हाइड्रेटेड, तो आपकी फिटनेस तो रहेगी रहेगी, बट आपको एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आपको ये दो चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान Hmm. रखना होता है। एंड जो आपने अभी मुझे पूछा पूछा कि स्ट्रॉन्ग टू परफॉर्म, हाउ हाउ डू यू स्टे स्ट्रॉन्ग टू परफॉर्म? सी Right. व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग, और लाइक आप जब जो भी चीज आप अपने दिल से करते हो ना, तो आपको इनर स्ट्रेंथ वो चीज करने के लिए ऑलरेडी मिल जाती है कि हाँ मुझे ये करना है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फिजिकली अगर मैं कुछ चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, तो मैं उसको कैसे भी करके ओवरकम करूंगी, जस्ट टू बी ऑन दैट पॉइंट कि आई वांट टू डू दिस। Hmm. दैट्स व्हाई जब भी कभी मुझे परफॉर्म करना होता है, या जब भी मुझे कहीं ऐसा इम्पोर्टेंट कुछ मेरा डांस का रिलेटेड कुछ होता है, तो आई डोंट नो वेदर इट कम्स विथ ऑल, और ये सिर्फ मेरे साथ होता है, तभी मेरा कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि आई वोंट बी एबल टू फोकस इट मोर, जिसपे मुझे ज्यादा Hmm. ध्यान देना। बिकॉज होता है ऐसा, somehow the Hmm. situations are in that, not in that way।
बट दैट आई टुक इट एज अ चैलेंज, एंड उसी पे मुझे वो चीज ज्यादा स्ट्रांग बनाती है कि राइट। आज मुझे ये चैलेंज आया है तो आई विल ओवरकम दिस, आई विल मेक माई टाइम स्पेयर फॉर दिस व्हाट आई रियली वांटेड टू, फिर वो मुझे रात में 1 बजे भी करना पड़े या मॉर्निंग 4 o'clock भी उठ के करना पड़े, बट दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन आई फिक्स्ड इट फॉर माई ओन सेल्फ. So if someone really wanted to be focused, be strong to perform, they have to be like give full dedication to your work. Like this is the only key. राइट। पानी का मेरे को लगता है, मैं क्या करता हूँ, वेक अप इन द मॉर्निंग एंड जस्ट ऑन एन एम्प्टी स्टमक हैव 3 ग्लासेस, राइट। Okay. एटलीस्ट आधा तो हो ही जाएगा। See, that's very true. If you have the empty stomach, 2 या 3 glasses पानी पीते हो तो see logically, as my knowledge, the logic is why you should take empty stomach 3 glass 2 glass. The reason हम्म, is आपका जो पूरी रात का सलाइवा होता है आपके मुंह हम्म, के अंदर, जो आप ना तो बाहर स्प्लिट करते हो ना ही आप अंदर लेते हो, वो सलाइवा इतना स्ट्रांग होता है कि हमारे अंदर के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए काम आता है, हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए काम आता है. ओके। तो वो अगर हमारे पानी के साथ अंदर जाता है स्टमक में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पूरी बॉडी मॉर्निंग में ही डिटॉक्सिफाई का काम करने चालू कर देती है. दैट्स द रीजन एवरी अदर पर्सन सेइंग कि मॉर्निंग में ज्यादा से ज्यादा पानी का इंटेक लो, 2 ग्लास 3 ग्लास. ओके, दिस इज द वन रीजन. सेकेंडली, जो आपने भी मेंशन किया कि मैं 2 3 ग्लास अगर सुबह में पानी पी लेता हूँ तो मेरा पूरा दिन का आधा कोटा तो तभी हो जाएगा हम्म, पूरा, राइट? राइट। सो दिस इज नॉट द वे. पानी पीने के लिए भी एक पैटर्न होता है कि एक साथ हम बहुत ज्यादा इंटेक ले लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम इतना यूज टू नहीं है. धीरे धीरे हैबिट होती है. तो आप अगर एक साथ ज्यादा पानी नहीं पी सकते हो तो 2 ग्लास या 1.5 ग्लास इनफ होता है. अगर आपको एक स्ट्रेच में पीना है तो, बहुत प्यास लगी है तो. और नहीं तो आप धीरे धीरे करके पानी को मुंह लगाकर, हम हमेशा पानी को, कितने लोगों को मैंने देखा है पानी ऐसे ऊपर से पीते हैं. हमारे बड़े लोग बोलते हैं जूठा नहीं करते, बट वो ऊपर से पीने से भी गैस होता है. हम एयर इनटेक साथ में ले रहे हैं पानी के, राइट। विच इज नॉट डन. बहुत सारे लोग पानी तो पीते हैं पर तरीका नहीं पता है उनको कि हम्म, हाउ टू ड्रिंक वाटर. तो पानी एक और चीज मेरे को अभी रिसेंटली में पता पड़ी है, मुझे लगता है मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए बिकॉज पानी की बात चली है. हम वॉशरूम जाते ही हमें ऐसा लगता है कि आई एम थर्स्टी, आई टेक वाटर, मैं तभी का तभी पानी पी लेती हूँ. बट दिस इज रॉन्ग फॉर आर इंटरनल यूरिनल फंक्शन. यू हैव टू बी लाइक, आप वॉशरूम अगर आपको जाना है तो उससे पहले यू हैव वाटर एंड देन गो. That I came to know recently. I don't know about other, but I came to know recently, so I'm following it also. ओके, ओके, Hmm. राइट। सो डू यू थिंक दैट एनी पर्सन फ्रॉम एनी एज कैन डांस? True, absolutely. I have interesting fact is मेरे पास 3 4 साल के बच्चे भी हैं जिनको मैंने डांस सिखाया है, और 67 years की एक लेडी को भी मैंने डांस सिखाया है. मैक्सिमम एज इज 67 जिनको मैंने डांस सिखाया है. सी, लर्निंग का, वेरी ट्रू, लर्निंग का कोई एज नहीं होता है. यू कैन लर्न इफ यू वांटेड टू, और कुछ भी लर्न कर सकते हो आप. इज नॉट मैंडेटरी कि कितने लोग कितने बड़ी बड़ी एज में भी फिर से स्टडीज चालू कर देते हैं. रीजन, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू लर्न. सो डेफिनेटली, हाँ, अभी आप फिटनेस की मतलब बिकॉज ऑफ डांस इज अ फिजिकल एक्टिविटी, तो आप बात करेंगे कि 3 साल का बच्चा क्या समझेगा, उसको तो चलना बराबर अभी सीखा है वो, तो वो क्या ही डांस करना सीखेगा. बट छोटे छोटे बच्चे, जितने ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जल्दी ग्रैप करते हैं एज कम्पेयर टू एल्डर पीपल. बिकॉज जैसा उनको सिखाया जाता है, जस्ट फॉलो, दे डोंट पुट देयर ब्रेन व्हाट आई एम टीचिंग, दे जस्ट फॉलो इन दैट देयर ओन, मतलब द वे आई एम टीचिंग. अभी जैसे जैसे आप छोटे छोटे बच्चों के साथ, चैलेंज ये होता है कि उनको याद नहीं रहता है कब क्या करना है. So राइट। if they are just coming for parents, जनरली जब भी मेरे पास छोटे बच्चों को लेकर आते हैं तो उनका एक ही चीज होता है, हम चाहते हैं कि ये कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे. दैट्स व्हाई वी केम हियर टू पुट देम इनटू द डांस क्लास. तो बच्चे धीरे 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 करते करते मेरे पास
3 बच्चे अभी भी मेरी क्लास में ऐसे हैं जो मेरे पास 4 साल से डांस सीख रहे हैं कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक। जस्ट जो मैं ब्रेक दे रही हूँ उसमें है, एल्स वो ब्रेक नहीं लेते। बाकी सारे बच्चे रोटेट हो रहे हैं पर वो चारों मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो वो चारों बच्चों के साथ मैंने जो ग्रेजुअली डिफरेंस देखा है, बिकॉज वो मेरे पास से ही सीख रहे हैं काफी टाइम से, तो उनका डे 1 से टिल दिस डेट दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। इवन दे आर परफॉर्मिंग इन देयर स्कूल्स। उनका स्कूल परफॉर्मेंस में दो दो कुछ भी वो मिलता है, कुछ भी होता है स्पेशल, तो दे कम टू मी कि इतना मतलब फ्रेंडली रिलेशन हो गया है उनसे कि दे डोंट थिंक लाइक आई एम अ टीचर ऑफ देम। तो मुझे भी उनको मेरे अपने लगते हैं, बिकॉज 4 साल राइट। से आप किसी के साथ में रहते हो कंटिन्यूअसली। मैं उन पे गुस्सा भी करती हूँ, उनको डांट भी पड़ती है, बिकॉज समटाइम्स दे वोंट बी डू। तो धीरे 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 करते नाउ आई टोल्ड देम कि अब तुम्हारा लेवल वो आ गया है कि अब तुम सेमी क्लासिकल से प्योर क्लासिकल पे जा सकते हो। एज लिमिट, यू आज मी अबाउट द एज या लिमिट, तो मैंने जो बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ता है उनका लेवल बढ़ता है, बच्चे परफॉर्म करते हैं वो बेटर वे से। क्लासिकल में एंड सेमी क्लासिकल से। classical, semi-classical, even in Bollywood songs also, there are many forms in Western हम्म। form also, जहाँ पे बच्चे एक लेवल पे आने के बाद आई फील लाइक कि उन्हें अब प्रोफेशनल ट्रेनिंग इस पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फॉर्म में ले लेनी चाहिए। सो आई अपफ्रंटली देम टेल देम, ऐसा राइट। नहीं है कि वो मेरे बच्चे हैं तो दूसरे के पास सीखने क्यों जाएंगे। इट्स नॉट इन दैट वे, मुझे हम्म। सारे फॉर्म्स नहीं आते। आई डोंट हम्म। टीच एवरी अदर फॉर्म ऑफ डांस। सो इफ आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड इनटू, why should I waste the talent of the student? राइट। So I upfrontly told them कि you have to search for this particular specification of the dance form जहाँ पे आप ये करवा सको। मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ तो उन्हें बताती हूँ कि ये वेस्टर्न में ज्यादा बेटर है, ये क्लासिकल में ज्यादा बेटर है। आप इसकी अपॉर्चुनिटीज, अगर आप चाहते हो कि ये इसमें आगे बढ़े और अच्छा हम्म। करता है, तो आप इसमें इसे डाल सकते हो। तो ऐसे ऑप्शंस मैं ही उन्हें बताती हूँ, बिकॉज उन्हें नहीं पता ना, उन्हें क्या पता, वो उन्होंने पेरेंट्स ने भेज दिया है। बीइंग अ टीचर आई मस्ट आई नो दैट कि आपका बच्चा राइट। किधर ज्यादा राइट। बेटर कर रहा है। कोई राइट। भी फील्ड में टीचर ही बता सकता है कि आप किस, आपका स्टूडेंट का स्टेटस क्या है, आपके बच्चे हम्म। का स्टेटस क्या है। अदर देन अगर मैं एल्डर्स की बात करूं इन द डांस फॉर्म, जो कि आपने मुझे बोला है कि कोई भी एज लिमिट, जैसे एक जो मैंने आपको बताया कि 67 ईयर्स की आंटी मेरे पास आए थे डांस सीखने के लिए। एंड वो मतलब 67 ईयर्स के थे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसी एंगल से मेरे को रियलाइज नहीं हुआ कि वो इतने एज में होंगे। शी मेंटेन्ड हर वेरी वेल। और इतने सबसे बड़ी बात जो उनमें मुझे लगी कि उनका एटीट्यूड, इट्स लाइक हैट्स ऑफ, कि मुझे नहीं लगा कि मैं किसी बड़ी लेडी को सिखा रही हूँ। शी वॉज सो फ्रेंडली, सो हम्बल, सो लाइक ऑलवेज स्माइलिंग, इतना शेयर करते थे हर चीज के लिए। तो मुझे उनको सिखाना बिल्कुल टफ नहीं लगा। दो डांस की बात करूं मैं, तो ये जरूर था क्योंकि उनका नेचर था कि वो ऑलवेज लवी हैप्पी गो लकी रहते थे। तो राइट। उनका जो डांस में वो चीज ऑटोमेटिकली दिखती थी। शी इंजॉयज एवरी मूवमेंट, तो वो मुझे उनको बिल्कुल सिखाना नहीं पड़ा। बट ऐसा था कि बॉडी मूवमेंट्स की जहां बात रही, मुझे उनको काफी सिंपल येट ग्रेसफुल स्टेप्स देने पड़े, जिससे हम्म। उनका पूरा बॉडी पोस्चर ठीक दिखे, कुछ ऑड नहीं लगे देखने वाले को। और शी वांटेड टू परफॉर्म फॉर हर ग्रैंड सन्स बर्थडे, दैट्स व्हाई शी केम। सो उनके ग्रैंडसन की बर्थडे के लिए शी वांटेड टू परफॉर्म, तो उन्होंने मुझे बोला मेरा ऐसा अटायर है, आई वांट टू परफॉर्म, मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने उस टाइम पे उनको डांस सिखाया। उसके बाद अभी भी जैसे आई टुक डांस फॉर्म ऑफ राजस्थानी फोक डांस घूमर। सो घूमर के लिए मेरे पास फीमेल्स बैच मोस्टली रहता है, और वो सारी फीमेल्स बड़ी एज में ही होती है, अराउंड 35 40 ऐसी एज की फीमेल्स भी होती है उसमें। तो उनके साथ थोड़ा चैलेंज ये होता है कि फिजिकली बहुत जल्दी थक जाते हैं एज कम्पेयर टू, उनका एनर्जी लो होता है एज कम्पेयर टू द किड्स बैच। राइट। तो वहां पर मुझे उनको बच्चों के साथ तो मुझे अपनी एनर्जी को लेवल अप करना पड़ता है, बिकॉज बच्चे कभी थकते नहीं है और उनको नया नया चाहिए होता है। एंड अदर देन इन द एल्डर्स बैच, मुझे उनका एनर्जी लेवल रेज करना पड़ता है। मुझे यहाँ हम्म। पे मेरा एनर्जी लेवल रेज करना पड़ता है, वहां पे मुझे उनका रेज करवाना पड़ता है। हम्म। बिकॉज वो लोग सीखना तो चाहते हैं, दे अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट उनका उतना सिंक नहीं बैठ पाता है उस एनर्जी से। सो इन दैट वे एल्डर्स और स्मॉल बच्चे के साथ में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता हम्म। है ऐसे। बट इट्स
thing which you really wanted to learn, तो आप कभी भी learn कर सकते हो. It's not Right. लड़का लड़की बड़ा छोटा. It's not like that. No limits. So while you are performing during the stage, what can you do like if you forget your steps? Oh, this is the thing जो कि बहुत अच्छे अच्छे performers के साथ में होती है, and it happens with me also. So it एक बार I was performing Rajasthani folk dance for my state level उदयपुर. उदयपुर Right. में state level के लिए I went for Rajasthani dance performance, and it was a group dance. And skit पे performance होता है ना, it was like that. And I was in the center leading the role of that particular dance, and center में ही I forgot the step. Hmm. And then what I did, I was like the background music चल रहा था and the flow was there. What I did, I just did something else in spite of what I forgot and Right. continue with the music because I understand the music. So I did other thing and then I continue with the group members. I saw here and there, it's like a part of skit, it's part of the program, Hmm. and continue with the other group members. So at the end, we all came to know that did a mistake. Even my teacher came to know that did a mistake. But later on, when I asked to the audience, there were so many people from my family also. So I went, no, we didn't realize there was any kind of mistake. And in the recording, when I saw, even I thought I did not like Hmm. there was no mistake, no flaws in the performance. The whole show went well, and I felt like कि later on जब मैं बाहर आई तो मुझे ऐसे लगा कि मैं रो दूंगी because of me the whole group suffer, like सबका performance गड़बड़ हो सकता था. तो ठीक है, people were there कि उन्होंने कुछ react नहीं किया, but I was like कि अब मेरे को बहुत बुरा लग रहा था. But later on when I came to know कि नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, तो ऐसा हो जाता है. Especially ये problem तब ज्यादा बुरा लगता है when you are performing with a group, because Hmm. ग्रुप ऑलरेडी सिंक में होता है. अगर Synchrony. आप हाँ. कुछ अलग करते हो तो आप नजर आ जाते हो. वो तो आई वॉज लकी दैट आई वॉज इन सेंटर ऑफ द स्टेज, तो लोगों को लगा Hmm. ये इसका स्टेप है, अदर लोगों का कुछ और होगा. Hmm. So it was in that way. So it happened, and at a very big level. I was performing for the state, and at that level, it Hmm. happened with me. Later on, जब आप सोलो परफॉर्म कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है. जब मैं कोरियोग्राफी सिखाती भी हूँ, तब मैं यही चीज बोलती हूँ, म्यूजिक एंजॉय करो, म्यूजिक को समझो. इफ यू अंडरस्टैंड द रिदम, यू कैन परफॉर्म एनीथिंग ऑन अर्थ. इट्स Hmm. नॉट कि जो मैंने एक्शन सिखाया है वही करना है. अगर वो भूल भी गए हो ऑन स्टेज तो डू विद द म्यूजिक. म्यूजिक दिमाग में लो, वर्डिंग्स दिमाग में लो, अपने आप एक्शन हो जाएगा. एंड इन दैट वे दे परफॉर्म. इवन आई टू इन दैट वे परफॉर्म. If anyone is aspiring to become a dancer, can you give them some suggestions? Okay, there are like legends in dancers, but if you ask me, definitely the main key which I really feel like कि Hmm. आपको as a dancer um, रखनी चाहिए अपने रूटीन में is the regularity, practicing, consistency, commitment, dedication. कुछ भी आप वर्डिंग दे दो, इसको कुछ भी ट्रेनिंग दे दो, बट वो चीज जरूरी है. आप बस डांसर बनना चाहते हो बिकॉज मैं ऑलरेडी अच्छा डांस करती हूँ, नो. Hmm. डांस बहुत लोग करते हैं, बहुत तरीके से करते हैं, अच्छा भी करते हैं, विदाउट हैविंग अ ट्रेनिंग भी अच्छा करते हैं. बट एज अ करियर इफ यू रियली वांट टू परस्यू, तो आपको एक ट्रेन्ड पर्सन के अंडर ट्रेनिंग लेनी चाहिए. और उसके बाद भी अगर आप ट्रेन्ड पर्सन के अंडर समहाउ ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हो because of your surroundings or situations or whatever the reason is, at least try to upgrade yourself by your own. There are many ways on internet. Hmm. There are like n number of videos, basic beginners के लिए होते हैं. तो एटलीस्ट उनसे लर्न करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करिए. एवरी डे कुछ भी अगर सीख रहे हो तो उसका प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. इवन इन माई डांस क्लास, एवरी डे जो मैं सिखाती हूँ, उनको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करके ही आना होता है. अगर वो बिना प्रैक्टिस किए हुए आते हैं, Ask you.
If somebody wants to contact you and learn from you, how can they do so? Okay, so I would like to tell first my social media handle, Swati Soni. I request Akash, please put my social media Yeah, handle yeah, in the yeah, yeah. description. People can contact me there. Other than that, you can contact me through, there's another one page which I specially open for the free session. I would like to mention that there is a free session going on online. I used to take weekly once. Through Zoom. I did Insta Live also, but Insta Live later on I closed it. So there is a channel, Let's Dance with Swati, where I take free dance sessions, a single 1.5 minute choreography, where n number of students come, go. There's no restrictions, no rules, nothing. People come, people learn, people go. It's not you Mm. have to become for the long time or regularly in my classes. You can come, you if you wish to learn, you can come uh, in the class. Just for that, you have to just message me on my Insta handle, Let's Dance with Swati. That is Right, my platform where I teach free dance class, right, because I really love to do, and I really want that everyone who really want to dance can come. It's not mandate कि आपको पैसे देके ही dance सीखना है. You can come, you can learn. So that channel is particularly for that. It's not mm, for any of my dance performances. If you really would wish to see my choreographies, my dance, you can go to my main page, which is Swati Soni, and you can contact me there in the message box. I will right. revert you for sure. And on the Facebook, you can message me with the same handle I am having on Mm. Facebook also. So you can message me, you can contact me there as well. Thank you so much. You were very informative. Yeah, It thank was you so much. It was great talking to you. pleasure was mine.